Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching your own channel, Sadan Khan Official. Before watching this video, kindly like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for receiving the new and latest videos of my channel. Friends, in today's discussion, I will discuss the examination of witnesses, which is related to the law of evidence and Kanuni Shahadat order. Friends, in this lecture, I will address that what is an examination, order of examination, examination in chief, cross-examination, re-examination, and then conclusion. First, an examination is a process by which a witness is given an opportunity to prove his or her verdict in a court. During this process, a witness narrates his story before the court. He is asked different questions by his own counsel as well as by the opposite party or counsel. Friends, एग्जामिनेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें विटनेस से गवाह को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को प्रूव कर ले कोर्ट के सामने। और इस प्रोसेस में विटनेस जो होता है वो सारी स्टोरी बयान करता है, नरेट करता है बिफोर द कोर्ट के सामने। ही इज़ आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, उससे डिफरेंट सवालात पूछे जाते हैं बाय हिज ऑन काउंसिल। उसका जो अपना काउंसिल होता है, मतलब जिसका वो विटनेस होता है, वो उससे वो भी क्वेश्चंस कर सकता है और इसी तरह उसका अपोजिट काउंसिल भी उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। So after this, Article 133 of the Kanuni Shahadat Ordinance. कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 133 क्या कहता है? Order of examination. Witnesses shall be first examined in chief, then if the adverse party so desired, cross-examined, then if the party calling him so desired, re-examined. आर्टिकल 133 हमें क्या बताता है कानूनी शहादत का? ये ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में है। इसमें ये बयान किया गया है कि ये कहाँ गया है कि विटनेस जो होगा वो पहले एग्जामिनेशन इन चीफ के थ्रू उसका स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो एग्ज़ामिन किया जाएगा और उसके फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन को एग्ज़ामिनेशन इन चीफ कहा जाता है। एग्ज़ामिनेशन इन चीफ उसकी अपनी ही काउंसिल ज़्यादातर करती है। इसके बाद वो क्रॉस एग्ज़ामिन हो जाता है। उसकी अपोजिट जो काउंसिल होता है, अपोजिट जो पार्टी होती है, जब उससे वो क्वेश्चंस आंसर करता है उस विटनेस से, तो उसको एक क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कहा जाता है। उसके बाद एट द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिज़ायर्ड, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह रह जाते हैं तो फिर वो एग्ज़ामिन किया जाता है वो विटनेस। इसका सब आर्टिकल 2 क्या कहता है? द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट्स। मतलब एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो उस रेलेवेंट फैक्ट्स पर ही मुनहसर करता है, उसी पर कंसिस्ट करता है। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस इज टेस्टिफाइड ऑन एग्जामिनेशन इन चीफ। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन उसमें ये कन्फाइंड नहीं होता कि उससे वही फैक्ट्स पूछ लिए जाए जो उसने टेस्टिफाई किया होता है एग्जामिनेशन इन चीफ में। The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to the cross-examination. री एग्ज़ामिनेशन जो होता है
جب کراس ایگزامینیشن میں جو میتھڈس ایکسپلین کرنے سے رہ جاتے ہیں یا اس میں کوئی کویسچنس رہ جاتا ہے تو پھر وہ ری ایگزامن کیا جاتا ہے ری ایگزامینیشن میں. اور اگر ایسی کوئی نیو میتھڈ آ جاتی ہے تو پھر کورٹ کے پرمیشن کے تھرو بائی پرمیشن آف دا کورٹ انٹروڈیوسڈ ان ری ایگزامینیشن. وہ فیکٹس کورٹ کے پرمیشن سے ہی ری ایگزامینیشن میں انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں. دی ایڈورس پارٹی میں فردر کراس ایگزامینیشن دیٹ میٹر. اور ری ایگزامینیشن کے بعد بھی ایڈورس پارٹی جو ہوتی ہے وہ ری ایگزامن کر سکتا ہے. سو فرینڈس دس واز دا آرٹیکل 133 of the قانونی شہادت ordinance order. I will further explain this in my next lecture, in my next video. I hope so this will be more understandable than previous topics. میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے جو میں نے لیکچرز دیے ہیں اس سے اچھا ہوگا. پلیز مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ دیتا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آپ کا اپنا چینل سادان حاملہ ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.